So is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Very good. So, welcome to your first class of your finance analytics. And first of all, welcome you all to the BBA 5, right? So, you are now in the final year, and definitely there is going to be lots and lots of pressure to study the difficult topics. But trust me, you will enjoy your final year. So all the best for your final year. Enjoy it, and do hope that this pandemic time gets over and we can again meet and interact and learn the concept one by one. So if you see the syllabus of your finance analytics, the subject which I am going to take along with one of the faculty, Mr. Anand Pal sir, is divided into your entire 5 units. So first unit is basic introduction, which comprises of the concept of financial analytics, and then introduction to R and Python. So R and Python language will be taken by Anil sir. Unit 2 comprises of the nature and sources of financial data. Now you all are the business analytics students, so you know that analysis is done on the data. तो अब अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंस एनालिटिक्स की, तो वी नीड फाइनेंशियल डेटा. So what is financial data? What are the natures of financial data? What are the sources of financial data? What is the clearing and pre-processing of data? And what do you mean by exploratory data analysis? This all will be in the part of your unit 2. So थोड़ा सा theoretical part रहेगा, but this will create the base for your upcoming units. So unit 1 is introduction, unit 2 is about your financial data, then unit 3 will be your machine learning and the languages. And what is machine learning, then how to build models using the accounting data, business valuation, analytics, etc. This will be taken by Anil Palsa. Then come unit number 4, which is your news, time series, and portfolio analysis. I'll take this, right? So, in this one, we will learn about first and the foremost what is portfolio. Then we will learn how to do the portfolio analysis. And then, on the basis of your time analysis, your news analysis, and the forecasting, how you come up with the projections, how you analyze the data, how you form your concluding statement, how you take the decisions, we will discuss in unit number 4. Unit number 5 will be totally algorithm based, building trading algorithm, that building trading algorithm, building stock price forecasting models using the machine learning and credit risk modeling. So it will be practical aspect, and this will be taken again by Anil sir, right? So the yellow highlighted portion will be under me, and the remaining part will be under Anil sir. Clear till this part that how the subject is divided between us? ठीक है. Yes, ma'am. चलिए, अब टेक्स्ट बुक्स की बात कर लें, रेफरेंस बुक की बात कर लें. सो आई हैव अ लिस्ट of the textbooks and reference books. You can have a picture, and even on the web pages of good websites, you can check the data, it is there. I'll recommend you all, if you want to find out any of the in-depth knowledge of a particular topic, you can even use the research papers which are there on the Google Scholar, right? Or on the different platforms. So you can check on the Scopus web page or the Web of Sciences. उस पे भी बहुत अच्छे है ना, इन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्चेस की हुई है. रिसर्च पेपर जितना रीड करोगे, उतना अच्छा नॉलेज आपके पास आएगा. Let's say I will be providing you the entire PPTs and the study material, and we will be doing the good questions, right? But still, for extra knowledge or for the references, these books are there, and you have the research papers also available on the net, which you can refer for the free and get the basic knowledge as well, right? Any doubt in the syllabus? Anything you want to add from your side in this subject? Or I can start with our first introduction today. Shall we proceed? Yes, ma'am. Sure. So let me share my PPT. Can you all see my
presentation? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Perfect. So now what is financial analytics all about? The entire subject revolves around this PPT. जो भी आज मैं इस पीपीटी में डिस्कस करूंगी वो ही डिटेल में आप अपने पूरे 5 यूनिट के अंदर पढ़ रहे होंगे. So this introductory session will be a discussion session between you and me. So now I want to know, what do you understand by financial analytics by yourself? आपके हिसाब से what is financial analytics? Any one of you? Ma'am, doing the analysis of the financial market with the help of the present data and with the use of the softwares to Okay. find the future predictions, Prediction. Okay. forecasting. Or he is somewhere down the line correct. बिखरे बिखरे points है. Anyone will like to add on more or will like to refine the meaning? Ma'am, Hmm. basically it focus on measuring data about your business. Okay, business data, good. And बिजनेस डाटा हो गया, आपका स्टॉक डाटा हो गया. 2 डाटा वर्ड्स आ गए हैं. और एंड चलो, correct. Everyone, both of you are correct somewhere down the line. But now let me link this point and create a refined meaning and definition which comprises of all the points of you have discussed, right? So financial analytics is field that gives different views of companies financial data. We have financial data. Now, what do you mean by financial data? The first question which should come into your mind. तभी तो पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, right? So, what is financial data? All the money, assets, liabilities which are recorded, which are recorded and presented in your financial statements and financial accounts become a part of your financial data. So I can say all the transactions which can be your asset, liability, income, expense, कुछ भी जो कि रिकॉर्ड हुआ है और प्रेजेंट किया गया है किधर, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दे बिकम योर फाइनेंशियल डेटा. Right? So if you have purchased a asset which is of 1 crore rupees, so your financial data is asset of 1 crore worth. Right? This is a data given to you. फिर इसके बाद क्या आएगा, ये 1 करोड़ कहां से लाया? तो बोला कि सब 50 लाख जो है वो उनके खुद के थे और 50 लाख का बैंक लोन लिया. तो दिस इज व्हाट, these are these small informations, and these financial information, money related information becomes your financial data. And when you do the analysis of these financial data of a particular company, firm, partnership organizations, NPOs, they become your financial analytics. Clear? यहाँ तक समझ में आया that what is financial data and how these datas are interpreted and what is financial analytics? एक छोटी सी brief line समझ में आई? Yes, ma'am. चल. Now
financial analytics helps you to gain the in-depth knowledge and take action against it to improve the performance of your businesses, right? So what happens is, when you do some data digging, when you do some data से research, they give you knowledge. अभी जैसे मैंने क्या आपके साथ knowledge शेयर की कि आपकी कंपनी है, let's say FA कंपनी, राइट, इन्होंने असेट खरीदा है and that asset is of 1 crore worth, right? So this is a normal data, but when you are searching and you are analyzing this data, you come to know more of things. And what is that? That this 1 crore money was there with you in the proportion of 50-50, the 50% by your retained earnings, the money which the organization had with themselves, and the other was bank loan. तो इस बैंक लोन से आपकी लाइबिलिटीज भी बढ़ गई ना बच्चे. So again, one more statement can be drawn that the 50 lakh rupees raise in the liabilities is because of the asset which we have of 1 crore rupees, right? So what you're doing, you are finding and you are gaining the depth knowledge, and this knowledge will help you out to improve the performances. How it will help? You will understand the different tools which we use. There are many tools which we use in understanding and evaluating the financial data, which helps you out to do the financial analysis. उन टूल से आप क्या करते हैं, आप इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं अपने बिजनेस में, आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं अपने बिजनेस की. So one of the tools you can say is your ratio analysis. The ratio analysis helps you out in checking the performance of your organization. And we know that the ratios are of 5 categories. So each category of different criteria helps you out to get the knowledge and check the performance level of your organization. कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस लेवल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, या क्या इंप्रूव करना है, या कैसे करें कि आपका जो आइडियल रेशियो है वो मैच हो जाए. So these all answers are able to find out if you do the analysis. And that is why nowadays the job for financial analytics is very important in every organization, and you have lots and lots of opening. Because now I was yesterday only discussing with one of my batch of the financial accounting and all, that calculation of the ratio is now done by the computer softwares. You just have to punch in the data, your ratios will be calculated and will be there in front of you. The recording of statements, the preparation of financial statement, everything is now done electronically. We have n numbers of software. We will discuss those software also in this class, but we have n numbers of softwares. We have the artificial intelligence which gives you the concluding statement also, but they all are waste if the manager don't know how to use that conclusion statements, how to use that ratios in the proper evaluation and understanding of a situation of a company and taking better decisions. तो ये जो ह्यूमन पार्ट है डिसीजन मेकिंग वाला, वो आपका फाइनेंशियल एनालिटिक्स से आता है, राइट? आपको एक बैलेंस शीट पकड़ा दी जाएगी और पूछा जाएगा कंपनी की पोजीशन बताओ. अब ये कंप्यूटर नहीं बता पाएगा, ये आपको ही एनालाइज करना पड़ेगा, डिफरेंट रेशियोज का हेल्प लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा दैट द कंपनी इज डूइंग ओके. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, यू इन्वेस्ट it is showing a good steady growth, right? So these statements come from the analytics, and this is what we are going to learn, the conclusions which you draw from the ratios, from the other financial data which you have. Is this point clear? Can I move ahead? यहाँ तक समझ में आया? Any doubt? No, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ गया. समझ में आ गया? चलिए. So now financial analytics plays a very important role in calculating the profits of business. कैसे? अब प्रॉफिट कैलकुलेशन भी करने के लिए आपको पता होना चाहिए that what type of profit you want to calculate.
Because if you remember, in your finance accounting classes or in your FOFM, in your BBA2, you have already studied that the word profit is a vague word, right? It's a vague word. कौन सा profit? किसका profit? Gross profit, net profit, operating profit? Which profit you are talking about? So it plays a really important role to analyze which profit you are calculating and how much you have gained in totality, and how you're going to use that profit in developing your business ahead, in using the money to sustainable develop your ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज आपका मोटिव सिर्फ एक साल का कंपनी चलाना थोड़ी ना है, उसे सालों साल आगे बढ़ाने का मोटिव होता है, राइट? सो फाइनेंशियल एनालिटिक्स helps you out in calculating the profit of business. It also helps into answering all the questions of your business, right, related to your business, such as फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में मुझे कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए, फ्यूचर में मेरी कितनी सेल्स हो जाएगी, 5 साल बाद मेरा अप्रोक्सीमेटली क्या वर्थ हो सकती है, मेरी स्टॉक में अभी कल क्या प्राइस होगी अगर मैं आज ये डिसीजन लेता हूँ. So financial analytics helps you in coming up with those answers which are related to your businesses. Clear? Can we move ahead? Any doubt? Anything you want to ask? No, ma'am. No? चल आगे बढ़ते हैं. Financial analytics is the creation of ad hoc analysis to answer specific business question and forecast possible future financial scenarios, right? It is a creation of ad hoc analysis. Now, what do you mean by ad hoc analysis? Any one of you? Anyone have any idea what is ad hoc analysis? कॉमन टर्म है बेटा, एडहॉक एनालिसिस बिजनेस इंटेलिजेंसी का पार्ट है. नो आइडिया? चलिए मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं. सो एक्चुअली एडहॉक एनालिसिस क्या है? ये वो एनालिसिस है जो कि आपकी बिजनेस इंटेलिजेंसी बीआई का पार्ट है, एंड इट इज अ process designed to find out the answer related to your specific business question. Ad hoc analysis आपका business analytics का part है. तो ये business analytics का part है आपका financial analysis, so that you can come up with the specific answers. Like I want to know that in upcoming 6 months how much profit I will be earning, right? So the analysis which you will be doing will be known as your financial analysis with the help of ad hoc analysis. Clear? आगे बढ़ूं? Is this point and this line clear to you all? Yes, ma'am. Okay. So the goal, अगर हम goal की बात करें, that what is the main goal of the financial analytics? It is to shape the strategy of business through reliable, factual insight rather than intuitions. हर चीज इंट्यूशन पे थोड़ी ना होती है, इंट्यूशन पे दुनिया थोड़ी ना कायम है बेटा. हाँ ठीक है, माना गट फीलिंग होती है, बट दैट गट फीलिंग इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट? ऐसे ही हर चीज तुक्के में नहीं चलती, और बिजनेसेस तो तुक्कों में बिल्कुल नहीं चलते. सो योर फाइनेंशियल एनालिटिक्स का मेन गोल is to give you the data, is to give you that information through which you will form these strategies. And in business strategies we have discussed different types of strategy. तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो आपको डेटा चाहिए, that should I merger, or should I go with the merger option, or should I acquire the company, or should I
liquidate my organization, or I should be the same way the way I am working on. This will be supported by the financial analytics documents कि साहब 5 साल में आपकी कंपनी का ये परफॉर्मेंस था, एट प्रेजेंट योर परफॉर्मेंस इज दिस, एंड वी प्रिडिक्ट दिस परफॉर्मेंस इन अपकमिंग 2 years or 5 years. And our analysis tells us that your organization is doing wonderful, and if any of the organizations of your any of the businesses, the competitor business, want to merge with you, go ahead. It will give you more of profits. It will help you out to expand your market, and will give you the golden opportunity to rule the market. So please go ahead. So ये go ahead वाला जो आपको आंसर है, वो आपको अंदर से इंट्यूशन थोड़ी ना आएगा, वो आपको आपका फाइनेंशियल एनालिटिक्स के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो बेचारे फाइनेंशियल एनालिटिक्स मैनेजर्स होंगे, जो रात रात भर आपको डिसीजन की स्टेटमेंट्स देंगे, वो सपोर्ट करेंगे. So the main goal of this entire subject, or this calculation, is to help you out in forming these strategies, and these strategies will be based on the factual insight. ठोस पुख्ता सबूत के साथ आपको बताएंगे कि हाँ असेट्स अच्छी हैं. क्यों अच्छी हैं? क्योंकि इतनी इतनी हमारे पास फिक्स्ड असेट है, उसमें से इतने इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट इतने, और लायबिलिटीज तो इतने ही हैं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कंपनी की पोजीशन अच्छी है. तो वो फैक्चुअल इंसाइट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. रिलायबल है. Why reliable? Because you have computed yourself. Computer systems are there. Artificial intelligence ही है. So that means the probability of getting biasness into the decision making becomes negligible. क्योंकि कैलकुलेशन में कोई बायसनेस नहीं हो सकती, आपके कैलकुलेटेड फिगर्स भी विंडो ड्रेस्ड नहीं हो सकते. राइट? सो दैट इज व्हाई दिस इज रिलायबल ऑल्सो. और इंट्यूशन के बिना तो बेटर है इन्हीं चीजों पे करो, क्योंकि इंट्यूशन गलत हो सकता है, पर ये डेटाज अगर सही चल रहे हैं तो गो अहेड, इट्स अ ग्रीन सिग्नल. By offering detailed views of companies' financial data, financial analytics provides the tool for firms to gain deep knowledge of key trends and take action to improve their performances. Right? So when you come up with these statements after the conclusion of the analytics, कि साहब ये आपकी actual position है, this will help you out to evaluate the performance and improve the performance. Let's take an example that you were evaluating one of the financial statements of a company, and you come to know that your current ratio is 1.5:1. So what is the ideal current ratio? अगर हम जनरल सेंस में बात करें, it is 2:1. बट आप जो इसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर रहे हैं वो 1.5:1 आ रही है, यानी कम आ रही है. So now what will be your next step? Your next step will be to come up to this target, and you will be working ahead. You will be planning the goals and the your strategies in such a manner that in the upcoming semester or an upcoming annual analysis, your current ratio gets into 2:1. So you will come up with the opportunities to dig in कि इसको 2:1 कैसे बनाए, क्या ऐसा करें कि हमारे करंट असेट्स जो है वो दुगने हो जाए करंट लायबिलिटीज की, कि हम लायबिलिटीज को पे कर दें या करंट एसेट्स और क्रिएट करें. व्हाट वी शुड डू. सो दिस helps you out in improving the overall performance of your organization, and they become the base of many of the decisions beta. Even your HR analytics somewhere down the line becomes related with the financial analytics. If you don't have money, then you will not be able to pay to the HR people, so that they cannot, the releasing of the funds will not take place, salaries ki. So HR is also looking on the financial data. Sales people are also looking on the financial data. Your marketing people are also looking on the financial data. Your shareholders, your investors, your creditors, your government, everyone is looking on your financial data, and they wait for the financial analyst to come up with the reports. Clear till this point?
anything you want to discuss or any thought is there in your mind and you want to share with me? आगे बढ़ूं? क्लियर Yes, यहाँ ma'am. तक? चल. Yes. बिफोर वी मूव अहेड, है ना, मैंने अभी 2-3 टर्मिनोलॉजीज आपके साथ शेयर की अभी. एक थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एनी वन ऑफ यू? Ma'am, balance sheet and profit and loss account. बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस? Ma'am, it is written records. रिटर्न रिकॉर्ड्स तो बेटा, रिटर्न रिकॉर्ड्स तो अकाउंट्स भी हो गए. मैम that convey business मतलब कोई भी बिजनेस मैम एक्टिविटीज को उसको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी में चेंज करता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है बच्चे. आई Ma'am, थिंक यू आर cash- गेटिंग कंफ्यूज. हाँ, किसी ने कुछ बोला अभी. Cash. शीतल? Yes, ma'am. Exactly. Cash flow statements. As per the new Companies Act, now your financial statement comprises of your balance sheet, profit and loss statement, cash flow statement, and if needed, fund flow statements also. Right? They all become a part of your financial statements. अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इश्यू करना पड़ता है क्या? पब्लिश कराना पड़ता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? कोई कंपनी को, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, माय फेवरेट, राइट? मेरी प्यारी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री. आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट आई लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट? सो रिलायंस वालों ने, लेट्स टेक अपना जियो का, जियो का इनने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लिए 31st वाले, 31st मार्च के 2021. So it was 1/4/2020 to 31st March 2021. इनने ये डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली, पीएनएल प्रिपेयर कर लिया, कैश फ्लो कर लिया, एफएफएस कर लिया. अब क्या करेंगे लोग? बैठ जाए, पार्टी करें, हो गया काम खत्म. इसके बाद क्या? कैलकुलेशन करने के बाद क्या करें वो? They have to get it audited. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके ऑडिट होंगे. ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर्स, सीएस या सीए लोग होते हैं. वो ऑडिट, जो आपके ऑडिट कोर्सेज के हिसाब से एलिजिबल है, आप लोगों के एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं, वो इन्हें इवैल्यूएट करते हैं. क्यों इवैल्यूएट करते हैं? व्हाई डू दे इवैल्यूएट? एनी आइडिया? मैम, क्रॉस चेक करने के लिए. एग्जैक्टली, क्रॉस चेक करना है. अमन इज करेक्ट. व्हाई वी हैव टू क्रॉस चेक? क्योंकि बेटा कंपनी है ना, कंपनी भले आर्टिफिशियल पर्सन है, पर चलती तो रियल ह्यूमन पर्सन से ही है. हो सकता है इन लोगों ने, है ना, विंडो ड्रेसिंग कर रखी हो, right? Every company wants to project their financial statements as the best statements because they want to be the world's #1 company. They want their market prices in the stock exchange to be at the height, right? तो उनने विंडो ड्रेसिंग करके भी तो अपनी स्टेटमेंट्स अच्छी दिखा सकते हैं. लॉस छुपा दिया उनने, नहीं बताया कि उनकी एक फैक्ट्री में आग लग गई थी और उनका इतना नुकसान हुआ, कहीं नहीं जिक्र किया. उनने नहीं बताया कि एक क्रेडिटर ने उनके ऊपर केस डाल रखा है, कुछ नहीं बताया, बैठे हैं, छुपा लिया डेटा. So that we have the actual data with us, the tested, reliable, without any errors, without any biasness. We have audit,
right? And it is a compulsion under the Companies Act that you need to have your statements audited. तो क्या होता है, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है आपकी कंपनी, है ना? कंपनी ईयर के एंड में अपनी पूरी सारी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी, ठीक है, अपने अकाउंट्स क्लोज करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी और फिर ऑडिट वालों को बुलाएगी कि आइए, come and do our audit. Then this audit company people will come, they will check, they will audit, and then they will release their report, जिसे हम audit report बोलते हैं. And this audit report, they write that we, after investigating, found out that all the financial statements of the Geo Reliance Industries are valid, are not biased, are accurate based on our judgment and our calculation and our assumption, data analysis. राइट, उन लोगों की सारी ऑडिट प्रोसेस में उनने ये फाइंड आउट किया है, वो सब चीज अपने हिसाब से बताएगी और उस ऑडिट रिपोर्ट के नीचे साइन भी करेगी, राइट? दिस सिग्नेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. And once it is signed, once it is verified, once it is told to the company that हाँ आपने अच्छा काम किया है, आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है, आपकी पीएनएल बिल्कुल करेक्ट है, आपके कैश फ्लो करेक्ट है, आपके एफएफएस सब 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 सही है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपने सही बनाए हैं, then they share these financial statement in their financial reports which they send to every equity shareholder. आप लोगों के पास रिकॉर्ड्स आते होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट्स के अंदर है तो आपको आते होंगे, एक बुकलेट टाइप होती है, उसमें सारी चीजें अटैच होती है, ये कंपल्शन है, ये डेटा शेयरिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो दे एड ऑन योर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, आपके पीएनएल बने होते हैं, नोट्स होते हैं, रेफरेंस अकाउंट्स होते हैं, उसके अंदर आपके ऑडिटर्स के सिग्नेचर भी होते हैं, डायरेक्टर के सिग्नेचर, सब कुछ आती है और वो सबको आपको शेयर करना आपका कंपल्शन है एज पर द न्यू लॉज, राइट? एंड दीज ऑडिटेड बेटा, these audited financial statements becomes the base data for our financial analysis. हमें जो उसी जियो कंपनी का अकाउंटेंट डेटा देगा ना, उस पे इतना रिलायबिलिटी नहीं होगी जितनी ऑडिटेड स्टेटमेंट में से हम लोग निकालेंगे. क्यों? क्योंकि ऑडिटेड है, वेरीफाइड है, चेक्ड है that there is no mistake, right? And then we will do the calculation. Why we need to do this audit, or why we are taking the help of the audited statements only? Because of a very common reason. अगर ये आपके पास रॉ डेटा ही विंडो ड्रेस्ड आएगा, अगर आपके पास रॉ डेटा ही गलत है, इट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, तो आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो भी गलत हुई, है ना? फिर उस कैलकुलेशन के बेसिस पे जो भी डिसीजंस लिए वो भी गलत हुए और आप एक लॉस में आ सकते हैं, राइट? सो टू एंड अप with a good decision making, wise decision or a better decision, you like to have a correct, tested, reliable, accurate raw data. And then when this are correct, आपकी कैलकुलेशन भी सही होनी है, उनके बेसिस पे आप डिसीजन भी सही लेंगे और आप लोग सही डिसीजन मेकिंग के अंदर आएंगे. Clear till this point that why we need to get the financial statements audited and why we use the audited financial statement for the analysis, not the raw material data जो ऐसे ही बोल देगा अकाउंटेंट की कैश अभी इस तारीख को हमारे हाथ में इतना था, ऐसे नहीं. जो आपके स्टेटमेंट्स में लिखा है ना, जिसके नीचे सिग्नेचर है ऑडिटर के और आपके है ना फाइनेंस कंट्रोलर के और सबने टेस्ट किए कि हाँ ये सही डेटा है, उसी को ही मानोगे, हर किसी का डेटा आप नहीं मानोगे. Clear till this point? Can I move ahead? Yes, ma'am.
So, as a subset of financial intelligence and the enterprise performance management, financial analysis affect all parts of business and is crucial in helping companies in predicting and planning for the future. मैंने अभी आपको बताया कि फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर सब जने नजर लगाए बैठे होते हैं. Even your marketing team, even your HR, even your sales, even your production, everyone, raw material order करने वाला भी बैठा हुआ, सब जने बैठे होते हैं. क्यों? क्योंकि आपका ब्लड आपकी कंपनी का वो फाइनेंस है, उसके डेटा पे ही सब कुछ फंक्शन करता है. जैसे आपका हार्ट अच्छा है तो आपकी बॉडी अच्छी है, अगर हार्ट ही खराब है तो बॉडी में कोई ना कोई खराबी होगी. उसी तरीके से ब्लड आपका फाइनेंस होता है, तो अगर आपका फाइनेंशियल एनालिसिस सही है तो सारी फंक्शन सारे आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो खुशी खुशी सारा काम आगे करते हैं, बिकॉज दे आर दी ओनली वन हु गिव्स यू द बजट. बेटा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही आपकी बजट एनालिसिस में मदद करता है, आपको बजट सैंक्शन करके देता है. नहीं तो आ जाएंगे मार्केटिंग वाले that sir, we are here with a new promotional campaign and for that you need to support us, and if this campaign has been executed well, we will be able to have the awareness to the, let's say, 2 crore population at one strength, and now we want your help. You release the fund. Acha, how much money you need? So 1 crore rupees. Do you think the finance manager will say yes to 1 crore rupees just like that? No. He will just tell them to wait. He'll say to go and work and research to reduce the cost. Until that time, he will be doing his own calculation. बेटा, कि 1 करोड़ रुपए देने कहाँ से दूं, क्या वो सच्ची में सही ढंग से डिसीजन देगा, क्या वो जो प्रोजेक्ट का जो उसने एनालिसिस दिया है वो सही है, वो कैपिटल बजटिंग करने बैठेगा, राइट? देन ही विल टेक द डिसीजन. अच्छा, 1 करोड़ कहाँ से लेकर आऊं, किधर से लेकर आऊं, मेरे पास पहले से ही बैंक लोन है, बाद में क्या मेरी कंपनी और इंटरेस्ट पे कर पाएगी, इंटरेस्ट पे के साथ साथ मुझे प्रिंसिपल भी तो रिटर्न करना है. सो दिस ऑल आर finally decided on the basis of money, and money is under the finance controller. So that's why financial analysis, financial analytics become a very important part for every business function and every department. Clear? Financial analytics involves using massive amount of finance and other related data to identify patterns to make predictions, such as what a customer might buy or how long an employee's tenure might be. ये सारी चीजें भी include होती है. With a wealth of financial and other relevant data from the various departments throughout their organization, corporate financial teams are increasingly leveraging this data to help company leaders to make informed decision and boost the company's value by helping business understanding their top and bottom line performances, measures and manage their assets and forecast variation with the organization and industries in which they compete. Financial analytics offers insight into organization financial statements, status, and improves the profitability, cash flow, and value of businesses. Financial analysis or analytics also helps companies improve income statements and financial processes. So they have taken the other example to explain you the entire process, which I have already discussed with you. So you can just go through by yourself and understand that how this helps you out in more detail, right? So we are going to study that thing which will help other department people also, right? So that is why the importance of financial analytics becomes more important, right? So we will wind up our today's lecture over here. Do you have any doubt? Do you want to share anything with me right now before we move ahead? We will continue in next class. It was just a basic introduction. I wanted to do it today, right? Tomorrow we will do the importance
and other discussion will be taken into consideration. Right? So that's all for today's video lecture. Have a happy learning, and thank you for staying with me for understanding what is financial analytics all about. So into tomorrow's lecture, we will learn why the financial analytics is very important. So we'll do the importance of the financial analytics. So thank you, everyone.